Good morning, students. Class 9 English Reader, Book Moments, Chapter 3, Iswaran the Storyteller. As we started in this chapter in our previous class, knowing about Mr. Mahendra, a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mr. Mahendra was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. He had one asset, and that was he had his cook named Iswaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. As at last we read that Ishan was telling a story to Mr. Mahendra about the falling of a tree towards the highway side, and the suspense he created. Mr. Mahendra was simply sitting on his canvas chair and listening to Ishwaran's stories without criticizing it uncritically. Now continuing the tale, he said, "The place I come from is famous for timber," Ishwaran would begin. "There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts." ईश्वरन कहते हैं कि मैं जिस जगह से आ रहा हूँ दैट इज फेमस फॉर टिम्बर. वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वुडेड फॉरेस्ट हैं चारों तरफ, और जो लॉग्स हैं दैट आर पुल्ड. हॉल मीन्स टू पुल और ड्रैग विथ फोर्स. वो जो पुल किए जाते हैं वुडन के बड़े बड़े लॉग्स ट्रीज के जो कट होते हैं दैट आर कैरीड टू द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स. एलिफेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि दे आर ह्यूज वेल फेड, यानी वो बहुत बड़े बड़े हैं, जायंट इन साइज और अकॉर्डिंग टू द फिजिकल अपीयरेंस, एंड दे आर वेल फेड, यानी उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है. दे आर टर्म्ड एज beast. Beast generally we talk about large, dangerous animals looking, especially the four-footed animals. When they turn wild, that means he's talking about the elephants, कि जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, they turn wild. Even the most, जो experienced महत होता है, महत is a person who takes care of elephants, okay, is not able to control them. वो भी उन्हें control नहीं कर पाता है. After this prologue, prologue means a separate section of literary work, यानी जो कहानी सुना रहे हैं उसका एक पार्ट. Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. Now, taking up elephant as the main character, he is weaving another story saying, "One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing a wild creepers and breaking branches at will." एक टस्कर यानी जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, हैविंग बिग टस्कर, द वाइट वंस, ओके, दैट एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट हियर एंड देयर. बुशेस के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ही इज स्टीयरिंग द वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस. नाउ ही इज सेइंग, "Mr. Mahendra, you know, sir, how an elephant behaves when it goes mad." Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story, यानी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अपनी ही स्टोरी में that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. यानी वो एक्शन करके दिखा रहे हैं कि इस तरह का एक्शन एक मैड एलिफेंट का होता है. Emulation means when we are imitating somebody, हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्ट को मैच करने की. The elephant reached the outskirts of our town, यानी वो टाउन के जो आउटर एरियाज है वहां तक चला गया है, breaking the fences down like matchsticks. जिस तरह से सिंपली हम मैचस्टिक्स को ब्रेक करते हैं, he is breaking the fences. He would continue. It came into the main road. Now that elephant has come to the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. यानी रोड साइड में जितने भी स्टॉल्स हैं, जो ओपन स्टॉल्स होते हैं, उन सब को उसने स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय. People ran helter-skelter in panic. That means people are running here and there in panic. They all got scared of that wild elephant behaving in such a way. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking
through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. नाउ रोड साइड से क्रॉस होते होते जो एलिफेंट है वो स्कूल के अंदर एंटर कर गया है, ब्रेकिंग द ब्रिक वॉल. थ्रू इट एंटर्स द प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग. Seeing the elephant, all the boys ran into the classroom and they all have shut the doors tight. The beast grunted. Now the word grunted means he is making that sound, okay, of making scaring others, and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water, and uprooting the shrubs. That means he is trying to destroy all the things. क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे? फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था, और जो हम कह सकते हैं वॉलीबॉल की जो नेट थी, एंड अगेन ही इज किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम्स, जो वाटर ड्रम्स थे वहाँ पे पीने का पानी के, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, यानी श्रब्स को उनके रूट से ही उसने बाहर निकाल दिया. मीनवाइल, यानी उस दौरान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यानी सारे टीचर्स स्कूल बिल्डिंग की टेरेस पे चले गए हैं. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द ग्राउंड. हेल्पलेसली हम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं. From the building, they are seeing the elephant. Now, what they are seeing? They are just helplessly watching the depredations of the elephant. Depredations, we can say that he is destroying all the things. Okay, act of doing such things which is of destruction. There was not a soul below on the ground. यानी कोई भी एक person ground पे नहीं था. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. वो मोमेंट ऐसा फील हो रहा था जैसे यहाँ पे कोई नहीं रहता है. The streets are completely empty. Every person seems to be disappear suddenly. यानी within moments ऐसा हुआ कि वहाँ सारे जो लोग थे वो गायब हो गए. I was studying in the junior class at that time. ना ईश्वरन अपनी बात बता रहे हैं. ये इंसिडेंट तब का है जब वो खुद उस स्कूल में थे. पर्टिकुलरली जब ये इंसिडेंट हो रहा है, he was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ था. I grabbed a cane from the hands of one of the teacher. यानी टीचर, किसी एक टीचर के हाथ में केन था. उन्होंने टीचर से वो केन अपने हाथ में ग्रैब कर लिया. And he ran down the stairs and into the open ground. यानी वो जहाँ की खुली जगह है वहाँ चले गए हैं. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. यानी ट्रंक में जो होल्ड कर रखा था एलिफेंट ने, वो उसे उस तरह से वेव कर रहे थे. Menacingly means he was trying to show his presence, that he is dangerous. It stamped its feet, kicking up a lot of mud. यानी बहुत सारी मिट्टी और डस्ट को वो अपने पैरों से स्टैम्प करके उड़ा रहे थे. It looked frightening. बहुत डरावना लग रहा था वो सीन जो था एलिफेंट का. The act of the elephant we can say. But I moved slowly towards it. Now he moved there. It looked frightening as he's saying, but anyhow, Mr. Iswaran, he's telling about himself that I moved slowly towards it. Stick in hand, people were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. Now, लोग अपने अपने घरों की टेरेस पे खड़े हैं, and ये जो word use किया है hypnotize, that means people hypnotize means when people try to say certain things जो वो खुद follow नहीं करते हैं. So उस तरह से वहाँ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू स्टॉप ईश्वरन कि आप उसके सामने मत जाओ. ही इज लाइक डेंजरस. एनीथिंग हैपन टू यू. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, जैसे गुस्से में देख रहा है. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मुझ पे अटैक करने के लिए तैयार है. इट्स लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. At that moment, I moved forward and mustering all my force. Now, mustering means he is assembling, यानी अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके, all my force whacked its third toenail on the quick. यानी completely
वैक्ट होता है जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो. इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. स्टन्ड यानी वो खुद जैसा लगा कि ही इज इन शॉक. द एलिफेंट इटसेल्फ वाज इन शॉक एंड इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. यानी वो पूरा शेक करने लगा ऊपर से नीचे. जिस तरह से पूरे फोर्स के साथ ईश्वरन ने शायद उसे स्टिक से उसके टोनेल पे हिट किया था. एंड कोलैप्स. कोलैप्स मीन्स अनकॉन्शियस होना. फॉल डाउन एंड गेटिंग अनकॉन्शियस. आप कह सकते हो एक तरह से बेहोश हो जाना. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling. Now, इस पर्टिकुलर मोमेंट में जहाँ एक्साइटमेंट आ रहा था एलिफेंट के साथ क्या हुआ आगे या स्टोरी में आगे क्या हुआ, ईश्वरन ने स्टोरी को एक बार के लिए पॉज कर दिया और वो खड़े हो गए वहां से मम्बलिंग. मम्बलिंग मीन्स मटरिंग करते हुए. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. यानी मैं लाइट्स ऑन करके आ रहा हूँ और खाना जो है डिनर जो है उसे गर्म करके ला रहा हूँ. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट मीन हम कह सकते हैं कंप्लीटली फैसिनेटेड. यानी मिस्टर महेंद्र भी उस स्टोरी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ईश्वर उस स्टोरी को कंप्लीट करें. अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. अब उनका जो अटेंशन था वो हैंग रह गया क्योंकि ईश्वर ने स्टोरी बीच में छोड़ दी. व्हेन ही रिटर्न यानी ईश्वर जब वापस आए, he could not pick up the thread of the story right away. यानी जिस एक्साइटमेंट में वो स्टोरी सुना रहे थे वापस आने के बाद वैसा मोशन फील नहीं हो रहा था. इस तरह का वो कहता ना कि स्पीड जिस तरह से वो सुना रहे थे, दैट मोशन वॉज नॉट अंडरस्टूड. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम. यानी महेंद्र को ने याद दिलाना पड़ा कि आप मुझे ये स्टोरी सुना रहे थे और हम इस स्टोरी के कंक्लूजन को सुनने बाकी था, ड्यू था. दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड. यानी जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं वेटनरी डॉक्टर, उन्हें बुलाया गया था टू रिवाइव द एनिमल. रिवाइव द एनिमल मीन्स रिवाइव मीन्स उसे वापस कॉन्शियस यानी ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ. वो बेहोश हो गया तो उसे वापस होश में लाने के लिए. ईश्वर वुड श्रग कैजुअली. नाउ श्रग मीन्स लाइक रेज टू एक्सप्रेस इग्नोरेंस. ऐसा फील हो जैसे वो इग्नोर कर रहे हैं इस बात को स्लाइटली कि उन्होंने जो किया, ये जो उनका आप कह सकते हो ब्रेवरी जो शो की इस एलिफेंट को कंट्रोल करके. 2 days later it was led away by its maho to the jungle. यानी 2 दिन के बाद इस एलिफेंट को जंगल में छोड़ दिया गया था, away with the moho. Now we'll end up here today. You go through the content. If you have any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.